Hello everyone. Good afternoon. I hope you all can see me. Yes, Toshin ji, we made a good profit yesterday. I can see काफी सारे लोग आ चुके हैं. Let me just add our expert to the stage and then we can start. Nikun sir, I've sent you a request to join in. Sir, can you hear me? Yes. Am I audible? Yes, sir. You are clearly audible. Perfect. So give me 1 minute. I'll just set up and then we are good to go. Sure. I can see काफी सारे लोग आ चुके हैं. Yes, God profit is. Thank you, Naina ji, for confirming. It's great to see कि काफी सारे लोग engage भी करते हैं. You know the answer they ask. That's really great to see. How many of you are joining in for the first time? कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका पहला सेशन है? Can you write yes in the chat? Okay, we have a couple of them. So I guess we can start the session from the initial introduction. Good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal. You will see me and my team daily hosting these sessions, being the bridge between you and the expert. जो हमारा I hope I'm visible also. Can you write if I am visible, Mr. Stockholm? Yes, okay. Nikun sir will be visible in a while, guys. So every day we have these two sessions. The morning session is at 9:30 a.m. Afternoon session is at 2:30 p.m. Morning session stocks के around focus करता है, तो we focus more around stocks, answer a lot of queries. जो हमारा afternoon session होता है उसमें हम derivatives के around ज़्यादा focus करते हैं. तो if we get some time या market sideways, when we don't have much engagement in the stock market, we take up stock queries. But we do share a PTSD before the end of the session. So you can drop your queries, but I'm not sure if we'll take it or not. We'll take when we have sufficient amount of time. Every day we have a different expert as per the expiry, and you have been seeing Nikun sir for a while taking the FINNifty expiry. Since we have a holiday tomorrow, we have Nikun sir taking FINNifty and BankNifty together. So welcome our expert and welcome everyone who has joined in for the expiry. We hope कि हमारी जो profit streak है वो चलती रहे. And Nikun sir, we are all set. You can turn on your camera. आपकी screen visible है and we are good to go. Yes, sir. You are visible, audible. Your screen is also visible. Welcome to another weekly expiry, first for the October month, and tomorrow being a holiday, आज FINNifty and BankNifty दोनों की साथ में expiry है. So पहले बात करते हैं निफ्टी जो मेन इंडेक्स है हमारा, उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्या चार्ट सेटअप बन रहे हैं. देखे तो लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा सा ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आया है. निफ्टी ने 26,270 के आसपास, 75 के आसपास ऑल टाइम हाई किया था. वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का करेक्शन आ गया है. तो और यहाँ पे अपना प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है, वहां पे रीटेस्ट कर रहा है. सो 25,750 770 फिलहाल ट्रेड कर रहा है. तो जब तक 25,500 जो मीडियम टर्म के लिए जो है ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट इमीडिएटली 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव करेक्टिव मूव हो सकता है. 25,500 इमीडिएट सपोर्ट है. तो जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक वापस बाउंस बैक 26,000 के आसपास देख सकते हैं निफ्टी में. बैंक निफ्टी जिसकी आज expiry है, I'll quickly share the levels of Bank Nifty as well. So Bank Nifty again all-time high अभी मारा था 54,467, वहां से 52,900 ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हो गया है. और आज Bank Nifty की भी एक्सपायरी है, बट बीइंग एन एक्सपायरी थोड़ा सा साइडवेज है. ऊपर सुबह एक स्विंग था, इफ आई ड्रॉ द 15-minute चार्ट, जहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से एक स्विंग आया ऊपर की तरफ एंड ऊपर से वापस थोड़ा सा करेक्ट हुआ है. उसके बाद it has been trading in a very narrow band of almost 200, 150, 180 points, जहाँ पे नीचे में 52,900 वो होल्ड कर रहा है.
एंड ऊपर में 53,000 5350 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन रहा है. एंड बैंक निफ्टी अगेन आज वीकली एक्सपायरी तो वीकली वीवैप हम जो यूजुअली शेयर करते हैं 53,300 है, एंड वी आर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स लोअर देन द वीवैप, व्हिच क्लियरली इंडिकेट्स दैट कैप्ड अपसाइड है और थोड़ा सा नेगेटिव बायस ही रहेगा हमारा इन बैंक निफ्टी. एंड फिन निफ्टी की अगर बात करें तो इवन फिन निफ्टी हैड अ सिमिलर स्विंग जहाँ पे वो गैप डाउन ओपन हुआ, ऑलमोस्ट ओपन वो सेम था, वहां से एक स्विंग देखा 100 पॉइंट का एंड वहां से थोड़ा सा करेक्टिव हुआ है. उसके बाद इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ बैंड ऑफ 24,525 एंड नीचे में अभी डेज लो किया है 24,452 के आसपास. सो 60-70 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड कर रहा था फिन निफ्टी एज वेल. बट फॉर द लास्ट आवर वीवैप की अगर बात करूं फिन निफ्टी की तो वो है 24,650 एंड वी आर 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स लोअर देन द वीकली वीवैप. तो which clearly suggests that upside capture और थोड़ा सा negative bias हमारा रहेगा for the last hour of trade. But being a dual expiry, we'll focus more on FINNifty first. If we get because momentum is clearly missing post the opening hour swing. तो वहाँ से एक consolidation ही है, तो we don't want to get into greedy and trade both the index in the same stance. So FINNifty पे focus करेंगे. If we get an opportunity in Bank Nifty, we'll definitely share the strikes as well as how to what to trade and where to trade. Index के levels हमने बता दिए, तो that is very important and we have shared and our view is negative to sideways. So FINNifty ने नीचे 460 445 के आसपास लो किया है, वहां से 20 पॉइंट्स का अपटिक आया है. सो साइडवेज ही रहेगा, साइडवेज टू नेगेटिव है. ऊपर में द लास्ट आवर के लिए जो रेंज we are working with this 24,520 to 24,450 and 445. So ये 50-60 points की range we'll try to play. So एक नीचे से थोड़ा सा bounce back हुआ है, we'll try and wait for some more bounce wherein it takes a resistance near 24,420 and then we can take a trade accordingly. So the strike that is on our radar for the weekly expiry per se is 24,550 put option FINNifty ka. So currently the market price of the put is 82-83. So what we are looking for is we'll try to buy this put in the range of 60 64-65. So 60-65 will work with. So ये रेंज में हम बाई करने की वेट करेंगे because we are playing the 24,490 and 24,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेगा. That is what we are trying to play for the last 40-45 minutes and which is why we are going on the put side and we are going in the money because the higher probability and the risk of premium decay को eliminate करने के लिए we are playing an in the money put option. The current spot level is 24,470. थोड़ा सा 15-20 points का उधर bounce back आता है 24,490 की तरफ, तो the put will get activated near our buying range, that is 60-65. We keep a stop of 40 and we look for 85 to 90 100 levels on the higher side. So that is the setup we are trying to play. We won't be too aggressive with regards to buying at CMP or buying 5-7 points here or there because the momentum is not that great. थोड़ा सा एक डाउन टिक आया लेकिन वहाँ से भी वापस 20-25 points का एक रिकवरी आया है. So I'm hoping and trying to play the support resistance game where we will try to play a sell trade near the resistance point by buying the 24,550 put option. So the range we have mentioned, the buying price, stop loss and target we have already mentioned. We can pin that and we'll wait for the setup to play out. And I think in the meantime, Anuj, we can take few queries if we have. I think the option and कुछ change रहेगा if we have to change as we always do. अगर कुछ buying range change करना है तो we'll definitely intervene and if the trade gets activated, we'll surely update on the same. So we do have some queries, but before that, BTST for the day. Okay, so I think BTST stock समझ में आ रहा था मैं.
HBL पावर है क्लासिकल 2:30 PM एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है HBL पावर, so almost 6-7 days का एक रेंज ब्रेकआउट है. So what we can do is we can take HBL power as a BTSC candidate where we can buy CMP which is 615, keep a stop of 598 and look for 640 and 645 on the higher side. So एक range breakout है 5-7 days का range breakout है, almost stop at double bottom on the daily scale, double bottom kind of a pattern बना है and it has given a range breakout of 5-6 trading sessions. So what we can do is we can do HBL power as a BTST, in that CMP 598 should be your stop and look for 640, 645 on the higher side. I think I'm audible, right? Yes, sir, you are clearly audible. So I've said the BTST, HBL power, 615 is the buy price, 598 and 640, 640 the higher side. I'm just repeating the trade. FINNifty 24,550 put, buying range 60-65, stop loss 40, target 90. Perfect. And sir, do we have any trade in BankNifty? Bank we will see if the FINNifty works out, because एक range में, so there is no point giving 2 trades and then in a dilemma that which one will work, which one will not work. If the FINNifty works and if we do have a correction, then we'll definitely share the BankNifty trade as well. But as of now, BankNifty तो FINNifty से ज़्यादा consolidated move में, so which is why we have opted for FINNifty of those two. So talking about stocks, let me just scroll up. Sir, view on IDBI. Stock थोड़ा सा एक narrow band में trade कर रहा है and PSUs have seen some consolidation and it has been underperforming, but नीचे में एक strong support है IDBI का 85 के आसपास. So 85 जब तक hold कर रहा है तब तक I think एक bounce back towards 90-92 can be expected. But अगर आपका trade है तो keep a stop of 85. अगर नहीं है तो don't be in a hurry to get into IDBI. Wait for a breakout about 90-93, then कुछ एक clear setup बनेगा in IDBI. सर व्यू LIC का क्या करें, 1200 बाइंग प्राइस है. सेम LIC थोड़ा सा PSU ऊपर से करेक्ट हुआ है, 1216 का हाई है, उधर से ऑलमोस्ट 200.20% करेक्टेड. सो एक अगर वीकली स्केल की बात करूं तो थोड़ा सा अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आ रहा है. तो एक प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आ रहा है. सो जो अपना डिमांड जोन है 980 के आसपास. 980 इज वेरी क्रूशियल फॉर LIC. अगर 980 के नीचे क्लोज आ जाता है तो एक और करेक्टिव मूव टुवर्ड्स 950 कैन नॉट बी रूल्ड आउट. अगर आपका फुल ट्रेडिंग पोजीशन है तो कीप अ स्टॉप 980. अगर 980 ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस पे तो 940 950 भी आ सकता है नीचे. सो व्यू ऑन इन पेट्रो. In Petro actually is looking good. The previous swing high की तरफ आ रहा है, which is 455 460 के आसपास. अगर 460 के ऊपर गिर जाता है तो एक strong up move आ सकता है, which can take it to 500 positional trade अगर कोई लेता है तो. अगर 460 एक 455 से 460 एक मिड रेजिस्टेंस जोन भी है, तो अगर उसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो एटलीस्ट 10% का मूव आ सकता है इन HPC. बट सेटअप इज पॉजिटिव. नीचे में सपोर्ट इज शिफ्टिंग हायर, तो अभी इमीडिएट सपोर्ट है 430 का, तो 430 के स्टॉप या सपोर्ट से आप होल्ड कर सकते हैं. जो 460 ऑन द हाई साइड, अगर 460 के ऊपर क्लोज आ जाता है तो अनदर एटलीस्ट 15-20 रुपीस का एक अपटिक आ सकता है इन HPCL. Sir, what is conviction delivery idea and velocity idea? What is the difference? So conviction delivery idea is basically for say a week's time, 5 to 7 trading sessions के time horizon से हम देते हैं.
So उसका stop loss usually रहता है 2-3-4% and target रहता है 6-7%, 1:2 का ratio रहता है, and the time period is 5 to 7 trading sessions. And velocity idea is basically with a view of 1 to 2 months or 3 months, 1 to 3 months, wherein we have it's like more traditional trade, a quarter का trade रहता है, wherein we give a deep stop loss, say 5-7% का stop loss, and the reward is 15-20%. So this is the difference between CDI and velocity ideas. Sir, a view on IRFC? IRFC सारे रेल PSUs थोड़े से अटक गए हैं, ऊपर से काफी करेक्शन आ गया, 220 का हाई किया था, उधर से ऑलमोस्ट 155 आ गया. सो आई थिंक नीचे में एक 150 और 145 इज काइंड ऑफ अ मेक और ब्रेक जोन फॉर IRFC. अगर 145 के नीचे क्लोज आ जाता है तो और करेक्ट हो सकता है स्टॉक. सो बी माइंडफुल ऑफ 150 एंड 145. 150 ब्रेक करता है तो एक बार के लिए और करेक्ट हो सकता है 5-7% से. ऊपर में रेजिस्टेंस है 165. अगर रिवर्सल ट्रेंड कोई बनता है तो 165 के ऊपर ही होगा. 165 के ऊपर क्लोज आ गया तो एटलीस्ट ये अपना बॉटम फॉर्मेशन लिस्ट ये फॉल अरेस्ट कर लेगा. Guys, can you hear me? Yeah, you are audible. Am I audible? Yeah, I think there's some drop from your end. Hello, can you hear me? Yes. I guess is there an echo? No. Okay, I guess I'm the only one who can hear the echo. Yeah, I think you're perfectly audible. There is no echo. Got it. Sir, can you please update on the trade? The trade again 78 के आसपास ही है जो पुट ऑप्शन रहेगा. ट्रैकिंग ऊपर में 88 क्या था, हमारा बाइंग रेंज है 60-65. सो विल वेट फॉर द सेम. विल कीप अ स्टॉप ऑफ 40 and we'll wait. I think consolidation में ही है. The spot is 24,467. So when we started the session it was 24,462. So एक 7 point का move आया है. तो I don't think that will move a needle in the derivative. So we'll wait for the setup and don't be too aggressive. अगर initiate होता है और अगर कुछ change होता है तो we'll definitely update on the same. I think there's some issue with Anuj. So I quickly scroll few queries. I was hearing multiple voices actually, so I was not able to concentrate. Okay. Okay, so guys, that's the update on the trade, and I'm just going back to the question. Sir, your view on M&M? I think auto that may have, especially four-wheelers में M&M and Maruti is performing. So और आज first second they usually announce their monthly updates on the number of sales orders there. So for the time being trend bullish है, तो 3050 के स्टॉप से होल्ड कर सकते हैं. ऊपर में 3250 and 3300 के टारगेट्स के लिए M&M. So trend is bullish, range breakout आया है तो I think 3050 के स्टॉप से होल्ड करना चाहिए. Sir, your view on Varun Beverages?
BBL एक रेंज में अटक गया है 640 650 ऊपर में और नीचे में 600, तो वापस अपने डिमांड जोन के पास आ रहा है 600 590, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है वहाँ पे, तो 590 और 600 के आसपास से वापस एक मूव आ सकता है, तो एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड वन कैन टेक अगर आप लेना चाहते हैं तो 590 के आसपास 600 के आसपास and look for 630 640 on the higher side. So 590 is very important support for VBL. Sir, your view on TCS? TCS ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है लेकिन कंसोलिडेशन में है, नीचे में 4200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 4350 और 44 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो एक रेंज बाउंड है लेकिन बायस पॉजिटिव है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव, तो नीचे में 4200 के स्टॉप से होल्ड करना चाहिए, अगर आप नया ट्रेड ले रहे हैं तो कीप अ स्टॉप ऑफ 4200 एंड लुक फॉर 4350 की हाई साइड. Sir, your view on Reliance Power? So the stock is making upper circuits last 8-10 दिन में upper circuit हुआ 33 वाला 30 51 हो गया है, तो आई थिंक अगर उसका लोअर सर्किट का ये होगा तो वापस 4-5 दिन लोअर सर्किट भी लग सकता है, तो बी माइंडफुल ऑफ आर पार. आई डोंट हैव मच व्यू ऑन दैट, बट 40-45 का एक सपोर्ट है और होल्ड करते तो ठीक है, मतलब तब तक वी आर फाइन, बट स्टॉक से बाय सर्किट पे ही है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव एनी व्यू ऑन दैट. अगर आप प्रॉफिटेबल है तो कीप ट्रेडिंग अ स्टॉप लॉस टू 45 एंड होल्ड. Sir, your view on BHEL for 2 to 3 days? BHEL एक रेंज में लेकिन नीचे में सपोर्ट भी बाइंग आ जाती है, तो 275 का एक सपोर्ट है which is a very good support for BHEL, तो अगर 275 होल्ड करता है तब तक ऊपर में वापस 290 के आसपास आ सकता है, तो कीप अ स्टॉप ऑफ 285, अगर आपको नया पोजीशन लेना है तो कीप अ स्टॉप ऑफ 275 के स्टॉप से होल्ड कीजिए फॉर 290. Sir, view on Tata Steel? Metal as a pact has outperformed last 4-5 दिन में after the China news, तो एक स्ट्रॉन्ग सर्ज आया 160 वाला 170 के आसपास है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट के पास है, कंपैरेटिवली कम अप हुआ है इन टाटा स्टील बीइंग अ लार्ज कैप, तो 172 का एक सपोर्ट है, 172 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां से थोड़ा सा करेक्टिंग हुआ है, लेकिन नीचे में 160 इज अ गुड सपोर्ट, तो 160 के स्टॉप से होल्ड कीजिए, लुक फॉर 175 एंड 180 on the high side. So again quickly on the update on the put option, नीचे में max 73 आया है, 73 हाफ का लो किया है, अभी वापस 80 भी के आसपास है, तो हार्डली 7 points का मूव है ever since we started the session, so we'll try and wait, I think last 5 minutes we'll try to give something on it, because if we have to change we'll try to change and give some trade on it. अगर बनता है तो definitely there is no point buying and then hoping that it works, so at least the comfort should be there that the audience and the viewers should not lose money, so that is our main agenda. Yeah, Anuj. Guys, please note we have already shared the BTST for the day. You can check your comment section or the pin section. Yes, HBL बार में मूव भी काफी शार्प है, 615 था, वहां से 627 का आई के अभी 624 है, तो 2% मूव आया पोस्ट दी शेयरिंग आर BTST. There is somewhere or the other you will make money. Sir, your view on Zomato? Zomato, I think the Swiggy IPO has triggered थोड़ा सा corrective move in that, but नीचे में 265 एक strong support है, तो 265 जब तक होल्ड कर रहा है, एक bounce back towards 290 can not be ruled out, but 260 for trading per se 260 के स्टॉप से होल्ड
कीजिए. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस शुड बी इन योर पोर्टफोलियो डेफिनेटली फॉर योर इन्वेस्टमेंट. सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट पर से इट्स अ गुड buy and hold candidate, but trading है तो keep a stock of 260 and look for 290 on the high side. So Jayashree T. JAY. Okay. The stock is up 18%. Daily में एक range निकला है, तो strong breakout है, almost काफी साल का 10 साल का breakout stock में दिया है. बस थोड़ा सा driven है by some news, but 145 का एक range breakout है, तो जब तक वापस उसके नीचे नहीं आता तब तक buy should be positive in that. और 17% ऊपर है stock, so I think you can keep a support of 155 or 152 and continue to hold. अगर आप काफी प्रॉफिटेबल है तो थोड़ा सा कैपिटल या थोड़ा 50% बुक करके कैन होल्ड द रेस्ट विद 155 एज अ स्टॉक, ट्रेडिंग स्टॉक. So Jio Financials. जियो एक रेंज में फंस गया है. एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था आई गेस 2 वीक्स पहले, वहां से एक कंसोलिडेशन में ही है. उसका मेन ब्रेकआउट वुड कम अबाउट 365 370. तो 365 के ऊपर एक शार्प अपटिक आ सकता है इन जियो फाइनेंस. पर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो कंटिन्यू टू बी लॉन्ग, कीप 340 और 338 एज स्टॉप एंड कंटिन्यू टू बी लॉन्ग. लुक फॉर 360 ऑन द हाई साइड, मतलब 2% का स्टॉप एंड लुक फॉर 3-4% ऑन द हाई साइड. एक रेंज अमाउंट है तो थोड़ा सा buy and hold वाला trade would work in Jio, and it won't work like आज और कल ऊपर बेच देंगे. So Bajaj Housing Finance. Bajaj post the listing 188 से almost 150 हो गया. तो I think अगर investment पर से it's a good play, but technically कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हिस्ट्री बहुत कम है. But फिर भी 148 एक strong support है, 145 146. तो लिस्टिंग मेकिंग दिन का लो है, that should be a good support zone. अगर वो ब्रेक करता है तो और थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है. So guys, it's time and I guess हमारा trade initiate नहीं हुआ. Yeah, and it's sad, but I think we couldn't help it because ever since we started the session, it was quoting at 80, नीचे में max 73 आया है. So 7 points के मूव में हम कहाँ बाय करते, कहाँ स्टॉप लगाते and कहाँ एग्जिट करते. So no point being too aggressive on a very lackluster day actually. Tomorrow being a holiday, थोड़ा सा आज एकदम lackluster moving both the index. Even last weekly expiry it was a very huge swing, so आज वाला थोड़ा सा sideways, almost sideways कर दिया. So we'll wait for better opportunity some other day. As of now there is no trade because कोई movement ही नहीं है. So 73 80 और 82, so 10 points के swing में कहाँ बाइंग बोलेंगे और कहाँ एग्जिट करेंगे. करेक्ट सर. एंड जैसा कि सर ने जसप्रीत जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं सर, प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं है. दैट इज आल्सो बिग थिंग. सेविंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ आई गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ लास्ट मंथ हमने 21 सेशंस किए थे इन एक्सपायरी, जिसमें से हमारे 16 सेशंस प्रॉफिटेबल थे एंड 2 सेशन लॉस में थे. बाकी सेशन में हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था. तो नाउ यू सी, अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते तो बाकी के सेशंस में भी हमारा लॉस होता. तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ लास्ट मंथ. ओवरऑल इफ यू सी वी हैड 16 profitable sessions and 2 loss sessions. बाकी हमारे 4 लॉस में थे बस. 4 नो ट्रेड थे. So this is the numbers that matters at the end of the month. So that will be all. Thanks everyone for joining in. We have shared the BTSC and see you tomorrow. I mean day after tomorrow. Sure. Thank you everyone. Thank you. Have a good day and a good holiday tomorrow.